Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavallabha Giri Varadahiraya Jai Gopi Janavallabha Giri Varadahiraya Jasodanandana Rajajananjanaya Jasodanandana Rajajananjanaya Jamunatira Hevane Shahariham Jamunatira Hevane Shahariham Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Gopi Janavallabha Giri Varadahiraya Gopi Jai Gopi Janavallabha Giri Varadahiraya Yasodanandana Bhajajananjana Yasodanandana Bhajajananjana Jamunatira Hevane Shahariyam Jamunatira Hevane Shahariyam Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Srila Prabhupada ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Gaur Premanande Hari Hari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Canto 10, verse number 33 and 34 of chapter 23, the Brahmin wives blessed. Shravanam Darshanam Dhyanam Mai Bhavanukirtanat Natatana Nikarsena Pratiyata Tato Granan Shravanam Darshanam Dhanyan Mai Bhavanukirtanat
मयि भावानुकीर्तना न तथा सनिकर्षेण न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययाथा ततो गृह्णन् प्रतीयात ततो गृहम् श्रवणं दर्शनं ध्यानं श्रवणादर्शनाध्यान मयि भावोऽनुकीर्तनात् मयि भावानुकीर्तना न तथा सनिकर्षेण न तथा सन्निकर्षेण प्रत्ययाथा ततो गृह्णन् प्रतीयात ततो गृहन् श्रवणादर्शनाध्यानात् भावानुकीर्तनात् भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहान् प्रतीयात ततो गृहान् श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् सन्निकर्षेण श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् Ladies, श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् anyone else? श्रवणादर्शनाध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् Shravanat, श्रवणात् by hearing. Darshanat, दर्शनात् by seeing the deity form. by seeing the deity form Dhyanat, dhyana by meditation. by meditation Mai, mani for me. for me Bhava, bhava love. love Anukirtanat, anukirtana by chanting my names and qualities. by chanting my names and qualities Na, no not. not Tata, tata in the same way. in the same way Sanikarsena, sanikarshena by literal proximity. literal proximity Pratyata, pratiyata return. return Tata, tata therefore. therefore Grihan, grihan to your homes. to your home So Krishna is instructing the wives of the Brahmanas, now that they had come to the forest to be with Krishna. Krishna's telling them how they can achieve him in the most beneficial and direct way. He says, it is by hearing about me, seeing my deity form, meditating upon me, and chanting my names and glories that love for me develops, not by physical proximity. Therefore, please go back to your homes. Please repeat. It is about hearing about me, hearing upon me seeing my deity form, seeing my deity form meditating upon me, meditating upon me and chanting my names and glories and chanting my names and glories that love for me the love for me develops, develops not by physical proximity. not by physical proximity. Therefore, please go back to your homes. Therefore, please go back to your home. मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्च विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों
एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सानिध्य से नहीं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। Verse number 34. Srila Sukadeva Goswami said, thus instructed the wives of the Brahmins returned to the place of sacrifice. The Brahmanas did not find any fault with their wives, and together with them they finished the sacrifice. Srila Prabhupada's short purport. The wives of the Brahmins obeyed Lord Krishna's order and returned to the sacrificial arena of their husbands, whereas the gopis, although ordered by Krishna to go home, remained in the forest to dance with him through the full moon night. Both the gopis and the Brahmanas' wives achieved pure love of Godhead. अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मणों ने अपने पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया। तात्पर्य, ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण के आदेश का पालन किया और वे अपने पतियों के यज्ञ स्थल को लौट गई, लेकिन गोपियां कृष्ण द्वारा आदेश दिए जाने पर भी उनके साथ पूनम की रात में नृत्य करने के लिए वन में रहती रही। गोपियां तथा ब्राह्मण पत्नियां दोनों ने ही शुद्ध भगवत प्रेम प्राप्त किया। Om Agyan Timidandasya Gyananjana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pachadine Nirvisesa Sunyavadi Satarine Vanchakalpa Tiruvishya Kripa Sindhu Pevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasati Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Some people, they want to see God. They say, can you show me God? So there's a method how to see God, and here it's described. Not only how to see God, but actually how to develop attraction for God in devotion. Atasi Krishna namari nabhavedrayam indriya sevamukhi hi jivado swayameva sparatyada. Prabhupada explains this verse. कुछ लोग पूछते हैं कि मैं भगवान को देखना है, तो यहाँ पर भगवान को देखने का पूरा तरीका बताया हुआ है कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। Prabhupada explains this verse by saying, seeing is not through the eyes, but through the tongue. प्रभुपाद बताते हैं कि देखना जो है आंखों से नहीं है, पर जीवा से देखना है। We can actually see Krishna through the process of sound vibration. हम भगवान को ध्वनि से देख सकते हैं। Krishna manifests himself in transcendental sound. भगवान अपने आप को दिव्य ध्वनि में प्रकट करते हैं। And by purifying the sound vibration in glorification of the Lord, one can gradually awaken their relationship with Krishna. In other words, one can see Krishna. तो भगवान की जो ग्लोरिफिकेशन प्रशंसा में जो दिव्य ध्वनि है, उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते, देख सकते हैं। The wives of the Brahmanas, they came all the way to the forest to be with Krishna. तो ब्राह्मण पत्नियां वन में आई थी भगवान के साथ रहने के लिए। Krishna was very much happy about that, but he wanted to explain to them that that's not the process for developing your love for me. तो भगवान उससे बहुत खुश थे, लेकिन भगवान बताना चाहते थे कि ये तरीका नहीं है उनको प्राप्त करने के लिए। And the process is Shravanam, Kirtanam, Vishnu or Krishna Smarnam, to hear and to chant and to remember the glories of the Lord. श्रवण कीर्तन स्मरण ये तरीका है, ये प्रक्रिया है प्राप्त करने की। Because Krishna has manifested himself especially in this age in sound vibration.
और इस युग में खास करके भगवान अपने दिव्य ध्वनि में प्रकट हुए हैं। On the absolute level, the name of Krishna and Krishna are the same. भगवान और भगवान के नाम में कोई भिन्नता नहीं है। The form of Krishna and Krishna is the same. भगवान का रूप और भगवान एक ही है। The qualities of Krishna and Krishna are exactly non-different. तो भगवान के गुण और भगवान में कोई भिन्नता नहीं है। And Krishna's pastimes are also himself in manifested form. और भगवान की लीलाएं भी भगवान खुद ही हैं। So this Nama, Rupa, Guna, Lila, these four aspects, when devotees focus on these, they can actually associate directly with the Supreme Personality of Godhead. तो जब भक्त नाम गुण रूप और लीला इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो भगवान का सानिध्य पास। How was the great souls able to write down the pastimes of the Lord? तो महान भक्त कैसे भगवान की लीलाओं के बारे में लिख सकते हैं? We have the books by the Goswamis, by Vyasadeva, by other great souls describing in detail Krishna's pastimes. जैसे गोस्वामी व्यासदेव जी उन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन किया है। They were seeing the pastimes. तो वो भगवान की लीलाओं को देख सकते थे। They weren't just imagining what was happening वो कुछ कल्पना नहीं कर रहे थे or reading other books. और कुछ दूसरी पुस्तकें पढ़ They were रहे थे। actually seeing the Lord's pastimes through their bhakti. तो वो भगवान की लीलाओं को अपनी भक्ति के द्वारा देख पा रहे थे। Of course, this is the perfection of devotion when one enters into Krishna's pastime. तो ये भक्ति का परमोच्च है जब भक्त भगवान की लीलाओं में जाता है। Even devotees have similar experience. भक्तों को भी ऐसा अनुभव आता है। We have one example where it was one devotee, I think it was Rupa Goswami, was describing that the hair coming down, the long braid coming down from Radharani's head, her hairdress, looks like a beautiful black snake. तो एक उदाहरण दिया है इसमें कि रूप गोस्वामी बताए थे कि राधा रानी की जो बाल है वो एक सर्प के समान है। I believe it was Sanatana Goswami. He didn't really agree with that. लेकिन सनातन गोस्वामी इससे अनुकूल नहीं, उन्होंने नहीं बताया इसके बारे में। He was thinking, how can we compare Radharani's hair to a black snake? तो उन्होंने बोला कि हम राधा रानी के बालों को एक काले सर्प से कैसे तुलना कर सकते हैं। So he didn't accept that. तो उन्होंने नहीं माना इसको। So one day in his meditation, एक बार जब वो ध्यान कर रहे थे, he was deep in his meditation, chanting the holy names. भगवान का नाम जप कर रहे थे। And in his mind, the gopis appeared in his mind. तो उनके मन में गोपियां प्रकट हुए। Radharani was there with some of her girlfriends. तो राधा रानी और अपनी गोपियों के साथ थे। And he's watching this. और वो देख रहे हैं। And then he sees, oh no, a snake is crawling up Radharani's back. तो उन्होंने देखा कि राधा रानी के पीठ पर एक सांप चल रहा है। And he says, be careful, a snake, snake. तो उन्होंने चिल्लाया कि ध्यान रखिए, वहाँ पे सांप है। Sarpa, Sarpa. And then the girls in the dream, they all started to laugh. और सारे जो Radharani was हंसने laughing, लगे। they were all laughing. तो सब हंसने लगे। And then the vision disappeared. और फिर वो दृश्य चला गया। So he got the message. तो उनको समझ आ गया। Yeah, so in that description, that comparison was there. But we see from this particular Leela that by the power of pure devotion, highly developed pure devotion, one can actually enter into the pastimes of the Lord. तो हम देख सकते हैं कि भक्ति की जो परमोच्च स्थिति है उसकी जो शक्ति से भगवान की लीलाओं में प्रवेश किया जा सकता है।
this material world is a combination of three modes of material energy: भौतिक जगत ये तीन गुणों से बना हुआ है, goodness, passion, and ignorance. सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। So with our senses and our mind and our intelligence and our body, we're experiencing life according to these three modes of material nature. तो हमारा मन इंद्रियों के द्वारा हम ये तीन गुणों के अधीन ही इस भौतिक जगत का अनुभव ले रहे हैं। But the spiritual energy is beyond these three modes. और आध्यात्मिक शक्ति जो है इन तीन गुणों के परे है। It's called Turiya, the fourth level. Turiya means the fourth level. तो चौथा स्तर है तुरिया। Beyond the fourth level is the fifth level, उसके परे पांचवा स्तर है, which is the pure spiritual world. वो शुद्ध आध्यात्मिक जगत है। So sometimes by meditation one brings the fifth level down to the fourth level. तो कुछ ध्यान करने के बाद कुछ लोग जो पांचवा स्तर है उसको चौथे स्तर पे ला सकते हैं। And one can see the reflections of the spiritual energy on that fourth level of consciousness. तो वो जो आध्यात्मिक जगत है उसका प्रतिबिंब चौथे स्तर पर देख सकते हैं। The consciousness has different levels. चेतना अलग-अलग स्तर की होती You know, you have the mode of ignorance, which is a very degraded kind of consciousness. जो तमगुण है वो बहुत ही निम्न स्तर का है। People are interested in sleeping सोने में उनका and intoxication, नशा पान करते हैं, acting crazy. अजीब तरीके से पागलपन करते हैं। And then you have the higher level of passion, where people want to make money. उसके ऊपर रजगुण है जहाँ पे लोगों को पैसा बनाना है। So I can give it to my honey. तो अपने प्रियतमा को देने के लिए Will spend all my money जो मेरे पैसे सारे खर्च करती है। and not on honey. So, now the second level, you know, the mode of passion, give me cars, give me computers, give me money, give me cell phones, give me material things. तो ये सारी भौतिक चीजें हैं, कार, टेलीफोन, ये सब ये जो है रजगुण का है। And the mode of goodness, और फिर सत्वगुण में let me go to the Himalayas, see the beautiful Lakshman Jula, Lakshman Jula, and beautiful, beautiful scenery, beautiful music, hear nice poetry, literature that describes very sweet, romantic, and very pleasurable scenes. तो सत्वगुण में जब होते हैं तो हम हिमालय की तरफ जाते हैं, लक्ष्मण झूले के बारे में महाराज बता रहे थे, फिर कविताएं और बहुत सीनरी जो है वो हमको अच्छा लगता है। Mode of goodness. But above that is the Turiya. Turiya means fourth. So in that level, when one enters into devotion, in their meditation of devotion, such as one becomes absorbed in chanting the holy names of the Lord, sometimes the Lord will appear in the mind of a devotee, and the devotee will see the Lord in the mind. इससे ऊपर जो चौथा स्तर है तुरिया, इसमें भगवान के जो भक्ति में है उनके मन में भगवान प्रकट होते हैं। And of course, this is accessible. The fifth level, we have to go there to experience that. That's the pure spiritual world. पांचवा स्तर जो है वो सबसे शुद्ध है, वहाँ हमें जाना पड़ेगा उसका अनुभव लेने के लिए। Just like if you seriously make plans to serve the Lord, अगर आप भगवान की सेवा करने के लिए प्लान बनाते हैं, that's on the fourth level. तो वो चौथे स्तर पे है। And it's already happening on that level. अगर वो उस स्तर पे हो रहा है, And when it manifests in activity, then it comes down to our level of experience. तो In other words, if you want to build a beautiful temple for the Lord, you want to build a beautiful temple for the Lord.
हम भगवान के लिए सुंदर मंदिर बनाएं। And so you gather the devotees together, you make plans, you start raising money, and you start constructing the different drawings, and you got the whole plan, and you're starting to work to bring that plan. तो हम पैसे जमा करते हैं, बहुत सुंदर एक प्लान बनाते हैं कि मंदिर कैसा होना चाहिए, भक्तों को इकट्ठा करते हैं। So the temple's already built तो मंदिर बन गया है on the 4th level. चौथे स्तर पर, And in due course of time, it'll manifest और on this कुछ ही level. समय में वो प्रकट होगा। By the strong desire and by the activities, the manifestation of that temple will actually come in the physical form. तो हमारी इच्छा और प्रयत्न से वो जो मंदिर बन गया है चौथे स्तर पर, वो प्रागट्य होगा कुछ दिनों के But बाद। if you don't plan and you don't work to make the plans happen, it doesn't manifest. लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करते हैं और प्लान नहीं बनाते उसको करने के लिए, तो नहीं होगा। We have the example of the South Indian Brahmin. तो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण की कहानी He है, was very poor, बहुत ही गरीब थे, but he wanted to worship the Lord with opulence. उनको भगवान की बहुत ही ऐश्वर्य के साथ पूजा करने की But he इच्छा had थी, nothing. बट उनके पास कुछ नहीं था। So he decided to worship the Lord in his mind. तो उन्होंने मन में उनकी पूजा करने का, So every day he would go to the temple in his mind तो वो मन में ही मंदिर जाते थे, and offer obeisances to the Lord, भगवान को नमस्कार करते थे, offer beautiful prayers to the Lord, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते and थे perform worship of the Lord. और उनकी पूजा करते थे। And then he would also want to cook for the Lord. और भगवान के लिए वो कुछ बनाना भी चाहते So थे, he would cook big feasts in his mind, तो एक काफी प्रसाद बना देते। just like right now we're thinking about what's for lunch. So we're cooking a feast in the mind right now. तो अभी हम सोच रहे हैं कि प्रसाद में क्या होगा, तो हम हमारे मन में बना रहे हैं। Yeah. So the mental level is also a reality. It's not just because it's not physically manifested, it's not a reality. तो मानसिक स्तर पे जो है वो भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि वो सत्य नहीं है। Just like sometimes you think about something and somebody will say, why are you thinking like that? They can pick up on your mental energy. जैसे कभी कभी आप कुछ सोच रहे हैं और कोई आपको पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, वो आपका जो So सोच पे। this Brahmana, he was absorbed. And this went on for a long time. तो ब्राह्मण वो ध्यान में थे, वो सोच रहे थे, And he was meditating on worshiping the Lord in so many ways. और वो भगवान की सेवा करने के लिए विचार कर रहे थे। So one day, he cooked sweet rice. तो एक दिन उन्होंने खीर बनाया And he wanted to offer it to the Lord. और भगवान को अर्पण करना चाहते थे, But he wasn't sure if it was cool enough to offer it. लेकिन उनको पता नहीं था कि ये ठंडा है, हो गया है क्या। So he wanted to test the temperature. तो उनको चेक करना था कि ये ठंडा हो गया है क्या। So in his mind, he put his finger into the sweet rice. तो अपने मन में ही उन्होंने अपना जो उंगली है वो खीर में रखा, And it burnt his finger. और उनका उंगली जल गया, On his finger, actually there was a burn mark. और उनकी उंगली पे सच में जला हुआ So निशान he दिखा। experienced the burning, although it happened in the mind, he experienced it on the physical level. तो उनके मन में हुआ, लेकिन फिर भी उनका उंगली जल गया। Narayan is with Lakshmi. Narayan, Lord Narayan is भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ थे। He said, Lakshmi Devi, I'm going to call my devotee back to me now. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भक्त को बुलाने वाला हूँ। In other words, he performed pure devotional service in his mind. तो उन्होंने मन में शुद्ध भक्ति की, And he became perfect. और वो पूर्ण हो गए, And the Lord took him back to the spiritual world. और भगवान उन्हें वापस आध्यात्मिक धाम लेके Here's गए। another example how the mind, when it's used in devotional service, becomes purified, and the whole consciousness becomes Krishna consciousness. तो ये एक और उदाहरण है कि जब मन को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, भक्ति में लगाते हैं, तो किस तरीके से वो शुद्ध हो जाता है। Although you're living in a physical realm, you can live in the spiritual realm through the power of meditation upon devotional service.
हम भौतिक जगत में हैं लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं, ये अपने विचार करके। So Krishna is saying, hear about me, go to the temple, see my deity, meditate up me, chant about my name and qualities, and you will develop love for me. Not if you want to come to see me in the physical form, not by that way. तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरे बारे में सुनने से, मेरा श्रवण ध्यान करने से आप मेरे को पा सकते हो, न कि मेरे को मेरा सानिध्य लेने से। The power of the holy name is none different than Krishna. भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है। Nija Sarva Shaktis. Lord Chaitanya speaks this line in the second verse of the six Shastakam prayers. He says all of the qualities, all of the names, all of the forms, all of the energies of the absolute truth are found in the name of Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे शिक्षाष्टकम के दूसरे श्लोक में कहते हैं कि भगवान की सारी शक्ति ये नाम में है। A materialist, when they come in contact with the holy name, they will think what is this? It's just 5 letters of the alphabet. एक भौतिक व्यक्ति जब नाम के संपर्क में आता है तो कहता है कि ये क्या है, तो सिर्फ एक शब्द है। How can you say 5 letters of the alphabet is God? कैसे आप कह सकते हो किसी 5 शब्द जो है ये भगवान है? So they don't believe that. तो उस पर विश्वास नहीं रखते। Now someone else who comes to the temple और कोई जो मंदिर में आता है, has a little association with the Lord जिनका and the भगवान के devotees, साथ, and will think, oh, the name is a representation of God. तो जिनका भक्तों के साथ, भक्ति के साथ थोड़ा संबंध आया, वो सोच सकते हैं कि भगवान का ये रिप्रेजेंटेशन है। The name of Krishna represents Krishna. भगवान का नाम भगवान को प्रतिनिधित्व करता है। So when there was one devotee, senior devotee, was giving class. One senior devotee was giving Bhagavatam class. एक बहुत ही सीनियर डिवोटी थे, भागवतम क्लास दे रहे थे। And Srila Prabhupada was there listening to the class. प्रभुपाद वहाँ थे, वो क्लास सुन रहे थे। He wanted to hear how his devotees learned the philosophy and were able to speak. So Prabhupada was there. तो प्रभुपाद वहाँ थे, वो जानना चाहते थे कि मेरे जो शिष्य हैं उन्होंने कैसे ये पूरा फिलॉसफी समझा है। And you know, if you Prabhupada was personally there, you'd sink into the chair, you know. तो प्रभुपाद वहाँ बैठे थे। You'd be like nervous. तो भक्त थोड़े मतलब, But this devotee, senior devotee, he was speaking about the holy name, and he said, and Krishna is in his name. तो उन्होंने कहा, जो वरिष्ठ शिष्य थे उन्होंने कहा कि कृष्ण अपने नाम में है। He is in his name. वो उनके नाम में है। Yeah. And Prabhupada stopped the class and said, where in his name is he? तो प्रभुपाद ने उनको रोका और पूछा कि कहाँ उनके नाम में वो है। And then the devotee got the message. Yeah, oh, no, Krishna is not in his name. He is his name. फिर उनको समझ में आ गया और उन्होंने कहा नहीं, कृष्ण उनके नाम में नहीं है, कृष्ण ही है नाम। Krishna's name is Krishna, no different. Nama Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha Punya Sudya Nitya Mukta Abhinna Tam Nami Nami No. Nami and Nama are the same. नाम और नामी एक ही है। Yeah. Okay. Keep it simple. You're not passionate enough. You need more passion. So, yeah, and we have many experiences how the chanting of the holy name protects the devotees, elevates the devotees, and even changes the external environment. तो हम देख सकते हैं कि भगवान का नाम जो है ये परिवर्तन करता है भक्तों के जीवन में। सॉरी। Okay. Should I tell a story?
Whoa. Can you keep with me on this one? I'll try. All right. If you sit in front of me, I can see you, and then I can talk to you, and then you can see me, and you can hear me better. Yeah, it's because if you don't see me and I don't see you, I'm not talking to you. I'm talking to everybody else. Okay. So I can talk to you now. If I can. Okay. So we were preaching in one city in America. तो एक बार एक सिटी में महाराज प्रचार कर रहे थे And we met one man who was he was let's see, he was an accountant. वो अकाउंटेंट का काम करते थे So he came to do our accounting for our temple. तो अपने मंदिर का अकाउंटिंग के लिए वो आए And so I made friends with him. I was running the temple. तो महाराज उस टाइम पे मंदिर का व्यवस्थापक देख रहे थे तो उनसे मित्रता हुई So he liked me, and he liked Krishna consciousness. तो उन्हें बहुत अच्छा लगा उन्हें कृष्ण भावनामृत And then he said, you know, I'm a disc jockey. तो उन्होंने बताया कि वो एक जॉकी है डिस्क जॉकी You know, radio announcer. हाँ Yeah. So he said, I have a show तो उन्होंने बोला कि मेरा एक प्रोग्राम है every day for 3 hours, हर दिन 3 घंटे के लिए from 9 o'clock in the morning to noon. सुबह 9 बजे से 12 बजे तक So come on my show. तो आप आइए मेरे And I'll, you know, you can speak about Hare Krishna. और आप आके हरे कृष्णा के बारे में बोल सकते हैं मेरे So I प्रोग्राम came तो महाराज गए वहाँ and I spoke, और and he उन्होंने asked me questions, और उन्होंने कुछ प्रश्न and he पूछे had me chanting, चैंट किया and so it was nice. बहुत अच्छा था वो So then I left. और फिर महाराज वहाँ से चले गए And then right around a few months later, it was the month of Jaist, कुछ महीनों बाद ज्येष्ठ मंथ में very hot. बहुत गर्म था And there was a drought, no rain. और वहाँ पे पानी नहीं था And the area where we are is all farmers. This was a big farm area. वहाँ खेती का एरिया था वो पूरा So the farmers were not getting rain, तो बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पे and the crops were drying up. और सारे जो खेती थी वो खराब हो रही थी It didn't rain for 3 or 4 months. 3-4 महीने तक वहाँ पे बारिश नहीं हुई And so it was a crisis. और बहुत ही तकलीफ का वातावरण था And the governments were saying, you can't wash your car. If you wash your car, we'll give you a fine for wasting water. तो गवर्नमेंट कह रही थी कि आप अपना कार नहीं धो सकते हैं पानी वेस्ट कर रहे हो If you use water to water your plants or sprinkle your outside lawn, you get fined. तो अगर आप पानी झाड़ों को देते हैं अपने लॉन में तो आपको फाइन लगता था So many restrictions trying to conserve water. तो बहुत सारे उन्होंने प्रतिबंध लगाए थे So I got a message from that disc jockey again. He said, can you come on the show again? तो वो जो व्यक्ति थे उन्होंने फिर से महाराज को कहा कि आप मेरे प्रोग्राम में आ सकते हैं And this time, can you bring more devotees with you? और ये बार और भक्तों को लेके आइए I said, yeah, happy to come. तो महाराज ने कहा हाँ मैं आऊँगा So I called the devotees from the New Vrindavan community. तो महाराज ने न्यू वृंदावन के भक्तों को बुलाया And the leader of the community also came. और वहाँ उनके जो प्रतिनिधि थे वो भी आए थे There was about 5 of us. तो 5 भक्त थे So we were on the show. तो महाराज शो पे थे And we're talking. He's asking questions to the leader. तो वो प्रश्न पूछ रहे थे And he said, can you guys make it rain? तो उन्होंने पूछा आप बारिश ला सकते हैं क्या And the leader of the community said, yes, we can. तो जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा कि हाँ ला सकते हैं So we're in the middle of this big radio show. तो रेडियो शो के बीच में And the radio audience is about 38 million people listening to the show every day. It was a popular show. तो ये जो रेडियो शो था वो करीब 38 लाख लोग देखते थे उसको So when we said, yes, we can make it rain, he was shocked. तो जब उन्होंने कहा कि हम बारिश ला सकते हैं तो वो अचंभित हो गए He says, you know, there's millions of people listening.
देखो लाखों लोग सुन रहे हैं, and you guys are going to be known as false prophets. तो आपको ऐसा कि झूठ बोलने वाले जो हैं ऐसा जाना जाएगा। But our leader said, no, we can make it right, no problem. जो लीडर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं बारिश आ जाएगा, So हम ला सकते हैं। he gets all excited, and he talks to he gets on the radio. He says, hear that, folks, the Swami is going to make it rain. तो बहुत ही वो उत्तेजित हो गया और बोला कि स्वामी जो है ये बारिश लाने वाले हैं। No, this drought was on for 4 months, and there was no sign of any rain going to come. तो ये जो सूखा था 4 महीने के लिए था और कोई वहाँ पे चिन्ह नहीं था कि बारिश आएगा। So then he said, what do we have to do to make it rain? तो उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना पड़ेगा बारिश लाने के लिए। We just have to chant Hare Krishna, that's all. तो उन्होंने कहा But there's one condition. तो हमें चैंट करना पड़ेगा हरे कृष्णा, लेकिन एक शर्त है। There's one condition. That everybody who's listening to the radio show, they all have to chant with us. और शर्त ये है कि रेडियो पे जो भी सुन रहे हैं ये शो, उनको भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ेगा। So when he heard that, he gets on the radio. He said, hear that, folks? The Swami's going to make it rain. Come on, we're all going to chant with the Swami. तो उन्होंने कहा कि स्वामी बारिश लाने वाले हैं और हम सबको उनके साथ ये जप करना है। So we began our chanting. तो महाराज ने चैंटिंग शुरू Hare की। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Come on, folks, chant with the Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And so he's saying, he's getting, come on, chant with the Swami, we're going to make it rain, So he had some faith. So then we just stopped and we talked some more. So that was 9:30 in the morning. And 2 hours later, show goes on for 3 hours. There was some report coming in to the radio station. तो 9:30 बजे ये प्रोग्राम चालू किया। 3 घंटे का प्रोग्राम था। 11:30 बजे एक They रिपोर्ट have these weather reporters who drive around in the cars and they see the weather and they call the radio and tell them what the weather's about. तो उनका ऐसा है कि कार में जो जा रहे हैं वो फोन करते थे रेडियो वालों को और बताते कि क्या वेदर दिखने वाला है। So he gets a call. तो उनको एक फोन आया। And they said, there's some clouds coming above. तो उन्होंने कहा कि बादल दिख रहे हैं, बादल आ रहे हैं। And then the show ended. और शो खत्म हो गया। At 12 o'clock. 12 बजे। 2:30 that day, it started to rain. It really rained. It was monsoon. It rained for 3 days straight. उसी दिन Must have 2:30 been a lot of बजे people out there chanting. उसी दिन 2:30 बजे से फिर कंटिन्यूस 3 दिन तक बहुत भारी बारिश हुई। And then, so now, everybody's happy, rain is back. And so this radio announcer, he comes to me and said, I talked to the mayor of the city and I told him that we should give an award to the Hare Krishnas. तो वो जो व्यक्ति थे For वो making आए it rain. और उन्होंने कहा कि मैंने मेयर से बात किया है और उन्होंने कहा है कि हमें हरे कृष्णा को एक इनाम देना चाहिए। So they give you some kind of award. So they have this big gigantic key. तो एक बहुत बड़ी चाबी थी। A key for opening doors. And it's big. It's like this, and it's made out of styrofoam. You know what styrofoam is? No? एक बहुत बड़ी चाबी थी। Fake material. So we थर्मोकोल से बनी हुई थी। So they give us this big key, which means we give you the key to the city of Cincinnati. तो उन्होंने ऐसी It's चाबी like दी an honorary award.
उन्होंने कहा ये चाबी, इसका मतलब है कि हम आपको सिनसिनाटी जो शहर है उसकी चाबी दे रहे हैं। So, of course, we should know that we don't use the holy name for material purposes. हमें भगवान के नाम का भौतिक कारणों के लिए नहीं यूज करना चाहिए। But we saw this as an opportunity to get all of these millions of people to chant. We weren't caring about rain or not. We would just want to get everybody to chant. तो ये एक संधि थी कि हजारों लाखों लोगों को भगवान के नाम का जप करवाने का। एक्चुअली जब महाराज थे उनको बारिश से कुछ लेना देना नहीं था उस वक्त। Prabhupada tells the story when he was about 2 years old, a year and a half old he was. He was living in Calcutta. तो प्रभुपाद जब 1.5 साल के थे वो कलकत्ता में रह रहे थे। And there was a big plague that happened in Calcutta. उस टाइम पे एक बहुत बीमारी जो थी प्लेग नाम की वो आई थी। People were dying fast. और बहुत सारे लोग मर रहे थे। And the plague was spreading. और प्लेग सब जगह फैल रहा था। And nothing could stop the plague. और कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। And Prabhupada said one Babaji, he organized Harinam Sankirtan. और एक बाबा जी ने हरिनाम संकीर्तन। And he started chanting and with a little kirtan party, and they were going in and out of people's houses and chanting the holy name. And after some time, the plague was gone. तो संकीर्तन पार्टी था, लोगों के घर घर जाके कीर्तन करते थे और कुछ दिन के बाद वो प्लेग चला गया। So of course, again, Prabhupada also says we usually don't use the name for, but in certain emergencies, we take shelter of Krishna and His holy name, and to somehow or other be protected from those dangers. तो भौतिक नाम का भौतिक जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए हम बहुत हरि नाम का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब इमरजेंसी है तो हमें करना। Krishna's name is Krishna. भगवान का It's नाम। not easy to understand. In fact, it's very difficult to understand that. और ये इतना आसान नहीं समझना, ये बहुत कठिन है उसे समझना। How can the name be a person? एक नाम व्यक्ति कैसे हो सकता है? But that's the nature of the spiritual energy, where the name, form, qualities, activities, entourage, abode, everything of the spiritual essence is non-different in itself in all of its varieties. तो ये आध्यात्मिक शक्ति का विशेषता है कि वो नाम, गुण, लीला और सब धाम इन सब से अलग नहीं है भगवान। So here Krishna tells the Brahman's wives, just chant my name and glorify me by remembering my qualities, and you will achieve love for me. तो यहाँ पे भगवान ब्राह्मण पत्नियों से कह रहे हैं कि आप मेरा श्रवण नाम जप कीजिए और इससे आप मुझे प्राप्त करेंगे। So that instruction is for all of us. This is the way to approach the absolute through Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. तो ये जो निर्देश है ये हम सभी के लिए है। Satam prasangam mama virya samvido bhavanti ritkarna rasayana kata. That chanting and hearing the glories of the Lord and the association of advanced devotees becomes nectar to the ear and to the heart. तो भगवान का नाम जप और श्रवण ये जो है ये एक अमृत के समान है कानों के लिए। And then the real devotional service begins. और तब सच में जो भक्ति है उसकी Bhaktir शुरुआत होती है। ratir anukamishiti. So this verse from the 3rd canto of Srimad Bhagavatam describes the glories of chanting the holy names and how devotees, bodhyantas parasparam tukut kantiyantam timam tushyanti cha, ramanti cha. Tushyanti is pleasing, very sweet, very happy. Ramanti, great joy. So devotees get great joy and pleasure in chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Chant and dance. And if you're too old to dance, just hold your arms up anyway. Can't dance. So that's our process. And realization of Krishna becomes available in due course of time if we seriously take to this process of hearing and chanting the glories of the Lord.
भगवान का नाम जप और उनका गुण सुनने से हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं, साक्षात्कार हो जाए। More and more and more. ज़्यादा से और ज़्यादा होते जाएगा। Okay, thank you. Hare Krishna. Prashna? Thank you, Maharaj, for a wonderful class. So, I have a question. Like when we chant, when we sit for chanting, that time only our mind get distracted by other thoughts. Yeah. So, how we can attentively focus on chanting? Krishna says in the Bhagavad Gita, wherever हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि जब जप करने बैठते हैं तभी हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं और मन इधर-उधर जाता है। Krishna says in the Gita, in the 6th chapter, wherever and whenever the mind wanders due to its unsteady and flickering nature, one should bring it back under the control of the self. भगवान भगवद गीता के 6ठे अध्याय में कहते हैं कि मन जहाँ भी जाता है हमें उसको उसके चंचलता की वजह से उसको वापस लाके अपने वश में रखना है। One devotee asked Prabhupada, when I chant, I can't control my mind. तो एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि मैं जब जप करता हूँ तो मेरे मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता। Prabhupada said, forget about the mind, just hear. तो प्रभुपाद ने कहा छोड़ भूल जाओ मन को, सिर्फ जप करो, Just listen to the sound. सिर्फ सुनिए ध्वनि को। And when you find your mind takes over, bring your consciousness back to the sound, that's all. और जब मन भटकता है तो वापस अपनी चेतना को लेके आइए वहाँ पे। Mind goes away, bring it back. वो चला जाएगा, वापस लाके आइए। Goes away again, bring it back. फिर बाहर चला जाएगा, फिर Just लेके keep आइए। it, bring it back to the sound. And when you connect with the sound, after some time, you get attracted to the sound. And the sound and the mind become two forces that are constantly working. The mind is hearing, the sound is going on. Krishna enters into your consciousness in the form of his name. तो जब हम ध्वनि को सुनते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, तो कुछ देर के बाद फिर हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। That's why we say 16 rounds, it's just the beginning. तो 16 माला जो है सिर्फ शुरुआत है। Satatam kirtayam tomam, always chant Hare Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One time Prabhupada said, our program is chanting, dancing and feasting. Bus. One devotee said, oh, but Prabhupada, we have so many things to go. Nothing to do. Chanting, dancing, feasting. That's all. Bus. But Prabhupada, this service, chanting, dancing, feasting. That's all. Bus. That's all. So what he's saying is that everything we do is chanting, dancing, feasting. He said, I'm translating into this microphone, I'm chanting. And I start walking, I'm dancing. And when I'm doing other things, it's a feast. Everything is chanting, dancing and feasting. तो प्रभुपाद ने बताया कि कैसे हर चीज चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग है। जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ तो मैं चैंट कर रहा हूँ। Chant karo, jap karo. जप कर रहा हूँ। No time, or no time. Got to go to work, no time for Krishna. Oh, no. No.
Not time. Ah. You're going to die soon. I know. Still, I have no time. No time. No time. Time is Krishna. Krishna says, Mrityu sarvarasya aham. I am time. So make time for Krishna means invite Krishna into your life because Krishna is time. तो भगवान के लिए समय निकालना मतलब भगवान को अपने जीवन में लाना. Mataji, Hare Krishna. No time. Oh, no time. Hare Krishna, Dandvat Pranam Maharaj. Thank you so much for such beautiful nectarian class. And my question is regarding our kids. Our kids are going to regular school and they are always deviated by the different allurements and other kids' lifestyles. Yeah. So how we can train their mind to fix their consciousness in the lotus feet of Lord? And at the same time, if they are not able to do so, how as a mother I can remain detached with that? Well, you shouldn't be detached. You should somehow or other try to. It's your duty to guide them in the right way. But they are influenced by their peers very strongly. तो माता जी का प्रश्न है कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं और उनको हम कृष्ण भावनामृत से कैसे जोड़ के रखें और अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो उनसे कैसे विरक्त रहे. तो महाराज कह रहे हैं कि हमें उनसे विरक्त नहीं रहना. So when they come home, then you have to say, no, this is not right. You should be thinking of God. You should be, thinking of nice things. They want to talk about, well, I don't know what they do in schools. The schools are just slaughterhouses. तो जब वो घर आते हैं स्कूल से तो हमें उनको समझाना चाहिए कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए. A child is very intelligent when they're young. When they grow up, they become stupid. जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, जब बड़े होते हैं तो मूर्ख बन जाते हैं. Yeah, there was the statistics that showed that the children at 3 and 4 years old, their brain powers are very good, clear, strong. They have good memories. When they go to school and get education, and their percentage of their intelligence drops more and more and more. It's a fact. These are statistics that show you go to school, you become stupid. You want education, it's Brahma Vidya, not Asurya Vidya, तो इसके ऊपर ऐसा रिसर्च किया है कि 3-4 साल के बच्चों की बुद्धि का जो स्तर होता है बहुत उच्च होता है और जैसे जैसे फिर वो स्कूल जाते हैं उनकी बुद्धि का स्तर कम कम होते जाता है. Yeah, if you can train the children at home, it's better. तो अगर घर पे ही उनको ट्रेन किया जाए तो बहुत अच्छा है. And there are many devotee children who don't go to school. They grow up and they actually become very intelligent. तो बहुत सारे भक्तों के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं. Because school is a social place also. It's for playing, for talking nonsense. तो स्कूल जो है एक सामाजिक जगह है जहाँ पे खेल सकते हैं और इधर-उधर की बेकार की बातें कर सकते हैं. Yeah. You don't learn anything in school. All you learn how to do is, get some what we call technical occupation so you can get a job and make money. तो स्कूल में हम कुछ सीखते नहीं हैं. वहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि हम एक काम धंधा करने के लिए कुछ चीज़ें सीख सकते हैं वहाँ पे. In the English language, the word education is there. तो ये इंग्लिश में जो एजुकेशन शब्द है. So we know education, right? So what is the Hindi word? शिक्षा. Huh? Shiksha.
education, right? So the etymological root word for education comes from the Latin. तो ये लैटिन से ये शब्द आया हुआ है एजुकेशन, Which means educare. That's the actual word for education in Latin, which has grown into the English education. तो लैटिन में एजुकरी करके जो शब्द है वो एजुकेशन बना And है, educare means to bring out. और एजुकरी का मतलब है कि बाहर लाना. So real education is to bring out what is already there तो एजुकेशन का मतलब है अंदर जो है उसको बाहर लाना है, and not add something on. तो उसके ऊपर कुछ डालना नहीं है. So it's not like, you put a coat of paint on something and that makes it, the color is already in the heart. It's there. तो सब हृदय में ऑलरेडी है, Because the soul is sat chit. Chit means knowledge, full knowledge. So real education is Brahma Vidya. तो सच्चा जो शिक्षा है वो ब्रह्म विद्या है. And so we learn other things. 1 and 1 is 2. Ek and ek is do. Do and do is char. Char and ek is punch. So, what do you need that for? We have Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे He में couldn't even write his name. वो अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे. But he was the guru of one of the most intelligent of all Gaudiya Vaishnava Acharyas, Bhakti Siddhanta Saraswati. लेकिन वो अपने वैष्णव गौड़ीय संप्रदाय के सबसे बुद्धिमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे. And Bhakti Vinod Thakur, he gives a very strong statement. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, He says, material education makes an ass out of a person. वो कहते हैं कि जो भौतिक विद्या है एक गधा बना देते हैं. You get an education, and then you go to work. आपकी शिक्षा मिला फिर आपको काम करना पड़ेगा. So who works? Asses work. और कौन करता है? गधे काम करते हैं. An ass he wants something to eat, but there's grass all around. Because he's an ass, he's so stupid. तो गधा जो है घास सब जगह है, लेकिन वो इतना मूर्ख है कि उसको समझ में नहीं आता. So the washerman, he loads the ass with all kinds of stuff, just to get and then he holds some carrot in front of the ass and says, तो एक धोबी है, वो उसके ऊपर सारा वजन लगाता है और सामने एक गाजर रखता है उसके, so he's walking, और वो चलते रहता है. thinking, oh, there's the carrot. ये गाजर है, मिलेगा मुझे. But all around him, there's nice grass. He can chew on the grass, but he's so stupid, he can't see that. तो चारों तरफ हरा भरा घास है, लेकिन वो उसको देख नहीं पाता. So work, yeah. Work for Krishna. भगवान के लिए काम करो. Yeah. Work for Krishna. And then that's not work, that's pleasure. तो वो काम नहीं रहता है, वो एक. But how will I feed my family? How will I feed myself if I work for Krishna? लेकिन अगर मैं भगवान के लिए काम करूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा? So there's one story. Pastime. एक फास्ट टाइम है. And Chaitanya Mahaprabhu, he's with Srivas Thakur. चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के साथ थे. He said, hey, Srivas, you don't work. You have a big family. How do you feed your family? How do you keep your family together? तो भगवान ने उनको पूछा कि आप अपने परिवार को कैसे साथ में रखते हैं, कैसे उनका पालन पोषण करते हैं. So Srivas, he went 3 times. तो श्रीवास ठाकुर ने 3 बार ताली बजाई. So Lord Chaitanya said, what does that mean? तो इसका क्या मतलब है? Well, my dear Lord, if Krishna doesn't provide food for my family for one day,
if he doesn't provide for me for all of our needs for 2 days, and if he doesn't give us what we need for 3 days, then I drown myself in the Ganga. तो उन्होंने कहा कि भगवान अगर कृष्णा मेरे को एक दिन में मेरे परिवार को जो खाने का चाहिए वो नहीं देंगे और दूसरे दिन में जो उनकी ज़रूरत है वो नहीं देंगे तो 3 दिन के बाद मैं अपने आप को डुबा दूंगा. And Lord Chaitanya, when he heard that, he just roared. He shook the whole universe. Srivas! If the goddess of fortune, Lakshmi, has to go from door to door with a begging bowl to live, there will always be food in your house. Evo! तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास लक्ष्मी जी को चाहे घर घर जाके भीख मांगना पड़ सकता है लेकिन आपके घर किसी चीज की कमी नहीं होगी. Yeah, Lord Chaitanya was so excited. He had complete faith that if he just serves Krishna, Krishna will take care of him. उनको पूरा विश्वास था कि वो सिर्फ भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान उनकी पूरी तरीके से. But then again, we want big house, nice apartment, maid servant, first class car, Rolex watch. Krishna says, I don't know if I'll give you that, but I'll give you what you need. हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, बड़ा घर चाहिए होता है, महंगी कार चाहिए होती है, तो कृष्ण ये सब नहीं, जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे. Anan bhavanti bhutani parjanyan anasambhava. That what do we need? Food grains, right? If you have food grains, you have food, and you also have wealth. Grains are wealth. जब अन्न होता है तो अन्न के साथ हमें सारा धन भी मिलता है. If you have cows, you have everything. You have milk, you have milk products, you have cow dung for cooking, you can heat your home with cow dung, everything. तो अगर गाय गोमाता है तो हमारे सब आ सकता है, गोबर आ सकता है और दूध दही सब. If you have a little land, you can plant crops and get your own food. और थोड़ा जमीन है तो हम खुद के लिए खेती कर सकते हैं. So what do we need? Krishna. That's all. If you have Krishna, Krishna provides. हमें सिर्फ कृष्ण चाहिए हमारे जीवन में. You know, the sannyasis, they're the richest ones in the movement. They don't work. They get all the money. Everybody says, oh, Swamiji, here is Dakshin. Swamiji, thank you very much. I will give it to Krishna. It's like Prabhupada. Prabhupada was saying about one yogi. प्रभुपाद एक योगी के बारे में बताते हैं. This yogi, when someone would give him money, he would say, oh no, money, that's material. Can't touch. तो एक योगी थे जिनको पैसे देने के बाद वो बोलते थे नहीं ये सब भौतिक है, इसको दूर रखिए. Prabhupada said, you give me money, more and more. And I'll use it for Krishna. प्रभुपाद कहते थे दीजिए, मुझे दीजिए, जितना पैसा है मुझे दीजिए, मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा. Prabhupada said, your money, Prabhupada said, my money is my money and your money is my money. तो प्रभुपाद कहते थे कि मेरे जो पैसे हैं वो मेरे हैं और आपके जो पैसे हैं वो भी मेरे हैं. Which mean everything belongs to Krishna, and the spiritual master represents Krishna. So whatever you give to the spiritual master, he gives it to Krishna. That's all. तो सब कुछ कृष्ण का है और आध्यात्मिक गुरु जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है, इसलिए जब हम आध्यात्मिक गुरु को देते हैं मतलब कृष्ण को देते हैं. So, yeah. So it's difficult to train children in this age because of so many other influences. तो इस वक्त मतलब बच्चों को शिक्षण करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे distractions हैं. But if you can create your little, Krishna conscious school, this would be a project you could develop, school for kids here. And the mothers can be the teachers.
तो यहाँ पे भक्त मिलकर एक छोटा सा स्कूल चालू कर सकते हैं जहाँ पे माताएं पढ़ा सकती हैं। Prabhupada wanted these gurukuls for, you know, training, educating children, तो प्रभुपाद ये गुरुकुल के बारे में बताते थे जहाँ बच्चों को and give them nice association. उनको एक अच्छा संग मिलेगा, They can have prasadam every day, प्रसाद ले सकते हैं, and a nice association with other kids who are also devotees. और दूसरे जो भक्तों के बच्चे हैं उनके साथ संग ले सकते हैं। What you do in the early ages of children will make an impression for the rest of their life. तो जो उनके बचपन में जो उनके ऊपर संस्कार होते हैं उनके पूरे जीवन भर रहते हैं। If they grow up on Mickey Mouse and Donald Duck, Mickey Mouse and Minnie Mouse, right? Which is the cartoon version of Radha and Krishna. Right? So yeah, this is, the material world is just a place of illusion, that's all. तो भौतिक जगत जो है यहाँ पे ये सिर्फ इल्यूजन है। So Prabhupada wanted you develop your own farms, grow your own food, keep cows, educate your own children, develop a society within the society. You don't have to go to work for the non-devotees and send our kids to schools and they get the wrong education, they pick up bad habits. Prabhupada wanted to create Krishna consciousness completely, social, educational, religious, all the aspects of society can be done within the devotee community. प्रभुपाद एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहते थे जिसमें सब साथ में आकर साथ में ही उद्योग करे, साथ में बच्चों का शिक्षण करे और सब कुछ साथ में करें। Taking care of the elderly people and training our children are both very important parts of, Varnashram Dharma, or service to Krishna in the form of service to his devotees. तो वरिष्ठ वैष्णव का ख्याल रखना और बच्चों का ध्यान रखना ये वर्णाश्रम धर्म का बहुत ही मुख्य अंग है। So you can do that. Get a nice big farm. तो ये हम कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा हमें फार्म लेने की जरूरत है। Create and build a school. और वहाँ पे एक स्कूल Kids, yeah, you have a lot of kids here. I saw when I was here Sunday night, so many young kids. बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे। Don't expose them to all of the nonsense in this material world. तो उनको ये भौतिक जगत की जो गंदगियाँ हैं उसके ऊपर उनको मत बताइए। So you have to work hard as a parents to make sure that they, get the right direction in life. तो हमें माता पिता होने के बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको। Yes. It's your duty. You have to do that. It's difficult. कठिन है लेकिन ये करना पड़ेगा। But the solution is our own schools, farms, places where devotees can do everything they usually do on the outside. They can even, have an occupation. तो यही उपाय है कि हमारा खुद का फार्म कम्युनिटी हो, हमारा स्कूल हो। The Brahmins will be the educators, the Kshatriyas will be the protectors and the organizers, the Vaishyas will be the farmers to grow crops and take care of cows, and the Sudras will help. तो ये वर्णाश्रम धर्म के बारे में बता रहे हैं जहाँ ब्राह्मण सबको शिक्षा देंगे और जो क्षत्रिय है वो वहाँ का कारभार देखेंगे और जो वैश्य है वो खेती करेंगे। These are the occupations, but we are all Vaishnavas. So we are Daivi Varnashram, not spiritual Varnashram, not just Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudras, but devotees doing Brahminical work, devotees doing Kshatriya service, devotees doing Vaishya service, devotees assisting. So everyone is a Vaishnava, but they're working according to different occupations within the society. तो हम लोग दैवी वर्णाश्रम है जिसमें वैष्णव जो हैं वो अलग अलग ब्राह्मण का कार्य करते हैं, क्षत्रिय वैश्य
और सबका। And Prabhupada said, before he left, he said, do this, establish this Varnashram. He said, it can only be done in the farms. Get these farms and develop Varnashram. तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो दैवी वर्णाश्रम है ये सिर्फ अगर हम फार्म कम्युनिटी बनाए तो वहीं पे ये स्थापित किया जा सकता है। And we have our Govardhan Eco Village. But we want many farms. Let's see. Radha, Rasa Bihari, they have a farm also. They keep cows. Well, this is the future because these cities are hell. महाराज कह रहे हैं कि हमें ऐसे बहुत सारे फार्म कम्युनिटी चाहिए जैसे इको विलेज है, जुहू का है, तलाश है। Like I was in Delhi about a couple of years ago, and I was staying with one family's house. I was staying in a home of one Grihastha family. तो दिल्ली में महाराज एक गृहस्थ परिवार के साथ रह रहे थे। So they have a young girl there. She's 14. She goes to school. तो एक 14 साल की उनकी बेटी थी। So I said, and it was the middle of the week. It was like a Tuesday or a Wednesday, and I said, "You're not going to school today. How come?" तो महाराज ने उनको पूछा कि ये मंगलवार बुधवार है, अभी आप स्कूल कैसे नहीं जा रहे हो? She said, "The schools are closed because too much pollution." तो उन्होंने कहा कि स्कूल बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पोल्यूशन है। Yeah, they closed the schools for about 3 or 4 days because the pollution was so bad, nobody could even go outside. तो प्रदूषण इतना ज़्यादा है कि 3-4 दिन से स्कूल बंद रखा है। And that can cause cancer and so many other respiratory problems also. और प्रदूषण की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। Just like they have this thing called the pollution index reader, where they have numbers to gauge how high the pollution is in the air. Those of you who know. तो प्रदूषण मापने के लिए वहाँ पे एक यंत्र था। So I was in Bombay a few years ago. तो महाराज बॉम्बे में थे, मुंबई। And I saw the pollution was so bad I couldn't even see the sun during the day. तो इतना प्रदूषण था कि सूर्य भी नहीं दिख रहा था दिन में। So I was talking to some devotees. I said, "What's the normal pollution number?" तो महाराज ने पूछा कि यहाँ पे प्रदूषण का क्या नंबर He सामान्य स्तर होता है? said the normal number is about 20. तो उन्होंने कहा कि ये 20 होता है यहाँ पे। I said, and he said, if it gets to 100, it's dangerous. और जब वो 100 हो जाता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। So what was the number? I asked. What was the number now? He said it's 523. तो महाराज ने पूछा कि अभी कितना है? तो उन्होंने कहा 523 है अभी। Yeah. Welcome to modern India. So we don't want to live in this hellish condition. That's why Prabhupada said, make these farms. And many of you have come from farm life, right? You grew up on farms where you had cows, agriculture. Yeah. Simple living. But when you don't have Krishna conscious, then it's difficult. But when you have Krishna conscious, everything is nice. So build these farms, make Krishna conscious farm communities. You should think about that. That's the future of your next step for Nigdi. Get a nice farm, and you have a big congregation here. It's a matter of time. You can put the energy. Devotees can work together as devotees instead of working for some non-devotee in the city. You have to repeat what I say. Come on. Yes, तो महाराज कह रहे हैं कि हमें He's too shocked. महाराज कह रहे हैं कि हमें फार्म कम्युनिटी पे ध्यान देना चाहिए। निगड़ी में बहुत सारे भक्त हैं, सब मिलकर ये फार्म कम्युनिटी बना सकते हैं। Yeah, what I say. Yeah. It's very important. It's the future of the world because cities around the world are also collapsing because of crime, pollution, drugs, and various types of noise. So the cities are, that's why, Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Siddhanta Saraswati said,
Another name for city is hell. तो ये जो फार्म कम्युनिटी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे ही दुनिया में अगर हम शहर की व्यवस्था देखें तो वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है, बहुत सारी बुराइयां हैं वहाँ पे। Yeah. So it'll get worse. It'll get worse और वो और बुरा होते जाएगा, because they have no solution. क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं है। Yeah. They have no solution for the problems. It just gets worse and worse and worse. That's all. क्योंकि उनके पास उपाय नहीं है, इसलिए वो और बुरा बुरा होता जाएगा। Prabhupada said, devotees, our future is in these farms. प्रभुपाद ने कहा कि भक्तों का जो भविष्य है वो इन सब फॉर्म्स में है, फार्म कम्युनिटी। I just finished a book. I wrote a book. महाराज ने एक बुक लिखी है, अभी जस्ट खत्म किया है उसको। It's just about what I'm talking about. तो जो अभी महाराज बता रहे थे उसी के ऊपर उन्होंने वो पुस्तक The लिखी है। title of the book is Krishna's Way, Natural Living. तो जो पुस्तक का टाइटल है कि कृष्णा's वे। And the book is being printed right now and should be ready in a couple of weeks. 2 हफ्ते में वो पुस्तक तैयार हो जाएगा। And it's mostly all of Prabhupada's statements about developing farm communities. और उसके अंदर प्रभुपाद ने जो भी कहा है फार्म कम्युनिटी डेवलप करने के लिए, उसके बारे में है वो He said when पुस्तक। you grow your own food, your food is 10 times more nutritious than what you buy in the stores. जब आप अपने लिए खुद के लिए अन्न उगाते हैं तो वो 10 गुना ज़्यादा पौष्टिक होता है। And Prabhupada spoke a lot about this. So many statements about importance of simple living, Krishna consciousness. तो प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें कही हैं कि सादा जीवन उच्च विचार के Well, ऊपर। this is your culture. ये हमारी So संस्कृति है। don't get illusioned by this Western culture. ये पाश्चात्य देश की जो संस्कृति है उससे हमें बह नहीं जाना है। Because Western culture is simply a, what do you call it, a way to make money, that's all. It's just about money, that's all. तो पाश्चात्य संस्कृति सिर्फ पैसा बनाने के लिए है। When someone asked Mahatma Gandhi, they said, Mahatma Ji, what do you think about Western culture? तो एक बार महात्मा गांधी से पूछा कि आपको पाश्चात्य संस्कृति के बारे में क्या लगता है? He said, I think it's a good idea. तो उन्होंने कहा कि एक अच्छा विचार है। Which means they should have culture. They don't have any culture. इसका मतलब है कि उनको होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, उनको अभी कोई संस्कृति नहीं है। Money is not a culture. सिर्फ पैसा ही संस्कृति नहीं है। Yeah. Tradition, family values, duties to each other, food, and various types of ways of living according to nature's arrangement, that's culture. तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर आता है, एक दूसरे से संबंध, किस प्रकार का अन्न लेते हैं। Now we have a money culture. तो अभी सिर्फ पैसे का ही संस्कृति। Everybody's chasing money. सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। But money is Lakshmi. पैसा लक्ष्मी है। And Lakshmi belongs to Narayan. You लक्ष्मी can't have Lakshmi without Narayan. तो लक्ष्मी को नारायण के बिना नहीं रख सकते। So society will collapse because they want Lakshmi without Narayan. तो सब ध्वस्त हो जाने वाला है क्योंकि उनको लक्ष्मी चाहिए नारायण के बिना। Ravana tried that. He tried to get Sita without Ram. रावण ने ये प्रयत्न करके देखा था, उन्होंने सीता को भगवान राम से अलग करने की कोशिश की। Instead he got Durga. he got Bhadrakali. So when you give up God for material things, you lose both. जब आप भगवान को भौतिक चीजों के लिए छोड़ देते हैं तो आप सब कुछ दोनों चीजें चली जाती है आपसे। But if we want our life to be free from the influence of this materialist society, which is a death society, then we have to develop our own lifestyle separate from that, and that is these farm communities.
तो हमें अगर इस भौतिक तरीके से अलग रहना है, इससे छूटना है, तो हमें हमारा खुद का फार्म कम्युनिटी डेवलप करने की It जरूरत है। says in the Shastras, it takes a village to grow a child. तो शास्त्र में बताया गया है कि एक पूरा गांव की जरूरत है एक बच्चे को बड़ा करने के लिए। Children need more than their parents. They need big family. बच्चों को सिर्फ अपने माता पिता के अलावा भी और बहुत जरूरत होती है बाकी लोगों की। Okay, I could speak on this till tomorrow. But we have to eat today, so, so I'm sure you have other services to do. We have another question, okay, from a very young, yeah, back there in the shirt. So Mataji, you have to really work to make sure, no, over there, behind, back there. Whoops. You really have to work hard to make sure your child gets the right training. It's not easy. But keep them in association with other devotee children, it's good. Hare Krishna Maharaj, Dandavad Pranam. My question is Bring how it to, up, bring as, it up, bring it close. as I am a student, how I can balance my life between the study and bhakti, like simultaneously seeing my career side also and trying to grow my bhakti in a way of the life. And also I have another question that how I can stable in the life of bhakti and study side by side, and is there any proportion for material life and spiritual life so that I can have career also and bhakti also? Well, sometimes people ask me this question, how can I balance my material life and my spiritual life? And I said, there's no such thing. You can't balance it. Why? Because if you put time in material life, that will grow. And if you put time in spiritual life, that will grow. तो महाराज को प्रश्न पूछा गया है कि कैसे आध्यात्मिक और भौतिक जगत जीवन को कैसे बैलेंस करना है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम जो है भौतिक जीवन में समय डालेंगे तो भौतिक जीवन बढ़ेगा, और आध्यात्मिक जीवन में समय डालेंगे तो आध्यात्मिक जीवन बढ़ेगा। So practically speaking, you need to keep a schedule where you have time to take care of your studies and at the same time for worshiping Krishna. तो हमें ऐसे अपने जीवन को ढालना है कि हमें दोनों के लिए समय मिले, पढ़ाई के लिए भी और साधना के लिए। But Krishna has to be first. लेकिन कृष्ण को हमें That's पहले why when we wake up in the morning, the first thing we do after we get ready, take our bath, we offer prayers, we chant, we read. Krishna is the first thing in our day. तो हमारा जीवन की शुरुआत जब होती, दिन की शुरुआत जो होती है, उसमें हमें भगवान को पहले रखना है, भगवान का नाम जप So करना है। you're here now. It's good the fact that you're doing bhakti now. And then during the day you do your studies, and then in the evening again more bhakti. So bhakti in the evening, bhakti in the morning, and if you do it in the morning, then you can also your studies become bhakti too. महाराज कह रहे हैं कि सुबह भक्ति करना है, फिर दिन भर पढ़ाई करना है, और शाम को फिर से भक्ति करना है। और सुबह अगर हम भक्ति करते हैं तो पढ़ाई भी भक्ति हो जाएगा। So what you do in the morning for Krishna consciousness is the most important. That's the most important. सुबह हम जो करते हैं कृष्ण भावनामृत के, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। So give that quality time. And then you'll have time for your studies also. I have one disciple, she was taking her PhD. तो एक महाराज की शिष्या है, वो PhD कर रहे हैं। So she was chanting 16 rounds. तो 16 माला जप करते हैं। And she was trying to do her PhD. और PhD भी कर रहे हैं। So she found it difficult to do both. तो उनको बड़ा कठिन हुआ ये करना। So she asked me, I need to reduce my rounds because I need more time for my studies. तो उन्होंने महाराज से पूछा कि मैं अपने राउंड्स कम कर सकती हूँ कि मुझे अपने I said no. I said, you keep your rounds
In fact, you even chant 17 rounds instead of 16. तो महाराज ने कहा कि नहीं, आप कम नहीं कर सकते, आप 16 से 17 माला जप कीजिए। She's a good disciple, so she listened. तो उन्होंने सुना महाराज की बात, And because she followed my instruction and chanted extra round, she was able to do both, and she graduated with her PhD also. क्योंकि उन्होंने महाराज के निर्देशों का पालन किया, इसलिए वो दोनों ही अपना पीएचडी भी पूरा कर पाए। Yeah. So Krishna was there to help. तो भगवान वहाँ पे थे You मदद give up करने। Krishna, you're on your own. You get no help. अगर आप भगवान को छोड़ देते हैं तो आप अपने आप हैं, आपको कोई मदद नहीं मिलती भगवान से। Keep Krishna first, and everything else will follow. तो भगवान को पहले रखना है और फिर सब चीजें अपने आप हो जाएगी। Okay, so thank you. Oh, you have a question too, yeah. Can we push this back? Does this one move back? Okay. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam. Prabhupada told in every time to enchant such a way, just like a baby cry. But we are chanting, but we are chanting. Crying for the mother. Baby crying for the mother, not just crying. Yes. But how can such a mood develop for a chanting, and how can that mood will be developed? When you realize you're helpless. तो प्रभु जी का प्रश्न है कि एक हमें ऐसा जप करना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, तो ये कैसे किया जाए? You're in the material world. तो हम भौतिक जगत में हैं। And it's a dangerous place. बहुत ही खतरनाक जगह है। Anytime, death can come. कभी भी मृत्यु आ सकती है। Anytime, disease can come. कभी भी हमें रोग आ सकते हैं। Anytime, somebody could say something and ruin your whole day. कभी भी कोई कुछ बोल सकता है जिससे आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। There's so many difficulties in this world. बहुत सारी तकलीफें हैं। So we have to take shelter of Krishna. तो हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। Be free from all of this. इन सब से छुटकारा मिलेगा। And that's one reason. वो एक कारण है। And then the other reason is we need Krishna. दूसरा कारण ये है कि हमें भगवान चाहिए। Without Krishna, we have no life. बिना कृष्ण के कोई जीवन नहीं। We may have so many other things in life, but they can't give us satisfaction, nor can they last. They will disappear in time. तो बहुत सारी चीजें होगी, ना तो वो शाश्वत है और ना ही वो हमें आनंद दे सकते हैं। So you have to realize you need Krishna. तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें भगवान चाहिए। Just like the baby needs the mother. जैसे एक बच्चे को माँ की जरूरत होती है। Now the baby cannot survive without the mother. हाँ, बच्चा माँ के बिना नहीं जी सकता। So the baby realizes that. और बच्चा ये समझता है। So he cries for his mother. इसलिए वो माँ के लिए रोता So है। we have to call out for Krishna. Krishna, come pick me up. तो वैसे हमें कृष्ण के लिए रोना है कि कृष्ण आइए। Ayinanda tunuja kinkaram matitam mam vishame bhavam buddho kripaya tavapada pankaja stita duli sadrisam vichintaya. I've fallen into this birth and death world. My dear Lord, pick me up. Put me as the dust on your lotus feet. तो मैं भौतिक जगत में गिरा हुआ हूँ, आप कृपया मुझे वहाँ से उठा के अपने चरण कमलों पे एक धूल का स्थिति। We have to let Krishna know we really want him. हमें कृष्ण को बताना चाहिए कि हाँ, हमें आपकी जरूरत है। If we think, oh, Krishna's there, when I need him, I'll call him. No, we need Krishna always. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण है, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं उन्हें बुलाऊंगा। Without Krishna, there's no life. बिना कृष्ण के जीवन नहीं है। And life without Krishna is simply, just movement. There's just no life. It's just movement, that's all. भगवान के बिना जीवन नहीं है, सिर्फ हिल डुल रहे हैं हम लोग। Prabhupada was in New York. प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे And he's walking down the streets with his devotees.
और रास्ते से जा रहे थे अपने शिष्यों And के he's साथ, pointing to all these other people in the streets. और दूसरे लोगों के को बता रहे हैं, दूसरे He लोग said, they're all dead. ये सब मरे हुए हैं, Although they're moving, they're dead. They're dead bodies. वो हिलडुल रहे हैं लेकिन सब मरे हुए हैं, There's no life because there's no Krishna. कोई जीवन नहीं है उसमें क्योंकि कृष्ण नहीं है। Okay? Thank you, Maharaj. So practice that. If you practice that mood of chanting, you will find that it's very satisfying. You simply cry out for Krishna. Krishna, save me. Krishna, pick me up. Krishna, give me the mercy of your holy name. Save me from this world of birth and death. तो इसका हमें अभ्यास करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कृष्ण को बार बार कि आप मुझे मदद कीजिए। Okay, so some of us will be crying for prasadam soon. So. One of them is this sannyasi here, who's been fasting for 24 hours. So now it's time for prasad, at least for me anyway. I don't know, maybe you all have prasadam. So thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Farm communities ki jai. Cool for Nigdi Yatra ki jai. Do it soon ki जय don't wait ki जय। परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज की जय। सो महाराज जी को हम धन्यवाद देते हैं, पिछले 3 दिनों से यहाँ पे आके बहुत ही सुंदर रूप से हमें अपना संग दे रहे हैं। सो महाराज जी, दिस इज आवर काइंडली रिक्वेस्ट that whenever you are here, please be coming here and give your holy association. I only come here to be here. When next time you'll be I'm not going shopping. Hare Krishna. So I come to see Vedanta Chaitanya, that's all. so महाराज जी को धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण।